everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be doing some questions जो हमने बीच-बीच में skip कर दिए थे. So the first question that we skipped was example number 1, part number 2. Let's complete that. Example number 1, second part. So example number 1, part number 2 says, in example number 1 we have to represent the following situations mathematically. Represent the following situations mathematically. Represent the following situations mathematically. And the second part says a cottage industry produces a certain number of toys in a day. Produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be $55 minus the number of toys produced in the day. The total cost of production was rupees on a particular day. The total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced. So we have to represent the situation mathematically. मतलब हमें इसकी equation form करनी है. That's it. हमें उसको solve नहीं करना. So the question says a cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक cottage industry है जो कुछ toys produce कर रही है in a day. Okay. So the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So number of toys produced हैं हमें उनको लेना पड़ेगा x, right? और कोई option नहीं है because उसी के basis पे हमें next line भी given है. So let the number of toys produced be x. Now cost of production it is said that the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced. मतलब कितना हो जाएगा x minus 55. इतना क्लियर है because it is said that जो number of toys produced हुए हैं उतने में से अगर हम 55 माइनस कर दें we'll get the cost of production of each toy. Okay, now on a particular day the total cost of production was, देखो अब total cost of production given है, हमें cost of production of one toy पता है तो and number of toys भी पता है. तो अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे, if I say 5 toffees are for rupees 10, right? तो अगर मैं बोलूँ
1 टॉफी 2 रुपीज की है, तो आप मुझे बताओ कि 5 टॉफीज कितने की होंगी। सो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, वही यहाँ पे करेंगे हम x इंटू एक्स माइनस 55, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय इंटू नंबर ऑफ टॉयज, वील गेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन equals to x into x minus 55, and that total cost of production is given 750. So 750 equals to x square minus 55 x. So the equation becomes x square minus 55x as it is लिखते हैं, and 750 को ट्रांसपोज कर देते हैं, so minus 750 equals to 0. So this is the required equation. So this is the required equation, x square minus 55x plus minus 750 equals to 0. So I hope this question is clear. Example number 1, part number 2. This was the part that we skipped in our previous videos. I don't know how. So now I am solving this with you. Please note down this so that we can start with further such questions. Okay, so now we are starting with exercise 4.1, question number 2, part number 4. That is also a similar question. We have to represent the situation mathematically, or we can say in an equation form. So this is exercise 4.1, question number 2,
Part number 4. Okay, so this part number 4 says a train travels a distance of a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more. To cover the same distance. We need to find the speed of the train. So the question says a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Distance given है हमें 480 kilometer at a uniform speed. All right. So there are two cases. देखो, first case is in which distance traveled is 480 kilometer and speed is a uniform speed. ठीक है, एक तो केस ये हो गया. Second case is when the speed has been 8 kilometer less. अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो जो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, अगर हम स्पीड कम कर देंगे ऑटोमेटिकली टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रैवल करने में सेम डिस्टेंस में. राइट. सो लेट्स मेक टू केसेस इन दिस क्वेश्चन. केस 1, we all know that speed equals to distance upon time. हमें स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं गिवन. सो टाइम निकालने के लिए हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम ऊपर आ जाएगा और स्पीड आ जाएगी डिनोमिनेटर में और डिस्टेंस वही रहेगा. जस्ट हमने टाइम और स्पीड को इंटरचेंज कर दिया. राइट. अब डिस्टेंस है हमारे पास केस 1 में 480 एंड स्पीड. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट दी स्पीड बी एक्स. लेट दी स्पीड बी एक्स किलोमीटर. एक्स. ठीक है, स्पीड अगर एक्स है तो ये हो गया, टाइम हो गया यहाँ से हमारे पास t1 ले लेते हैं हम इसको, बिकॉज इन केस 2 अगेन हमें, दिस इज केस 1. Now case 2, again speed equals to distance upon time. So time equals to distance upon speed. यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा 480. डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड कितनी होगी x माइनस 8. वाई? बिकॉज दिस इज t2, दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2. वाई? बिकॉज देखो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो हम स्पीड हमने x ली है तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर. अब मतलब टाइम हमने यहाँ से भी निकाला, टाइम हमने यहाँ से भी निकाला, पर हमें ये पता है कि ये वाला टाइम 3 आवर्स ज़्यादा है इस वाले टाइम से. ठीक है, ये वाला टाइम ज़्यादा है, दिस इज 3 आवर्स मोर. ये वाला टाइम कम है.
सो नाउ व्हाट वी विल डू, देखो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मुझे ये पता है कि ये 10 आवर्स हैं और ये 7 आवर्स हैं, ये 3 आवर्स ज़्यादा हैं, तो दोनों को माइनस करके 3 हम लिख सकते हैं। 10 माइनस 7 इज 3, तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे। दिस इज 3 आवर्स मोर, राइट, तो पहले ज़्यादा वाला लिखेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। ये बनेगी हमारी इक्वेशन जो हम करेंगे सॉल्व, बट इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमें इक्वेशन बनानी है। सो फॉर दिस नाउ वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम होगा इन दोनों का x इंटू एक्स माइनस 8, राइट। तो यहाँ पे x माइनस 8 ऑलरेडी है तो इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो ये हो गया 480x। इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे होगा इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8, राइट, क्लियर। सी, तो ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस 0 as it is, 8 8 is 64, 6 carry, 8 4 is 32, 32 plus 6 38, 3840, ठीक है, इक्वल्स टू 3। तो ये तो 0 हो गया, 480x माइनस 480x, सो दिस इज 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सो दिस इज 3840 इक्वल्स टू 3x square minus 8 3s are 24x. So 3x square minus 24x minus 3840 equals to 0. This is the required equation. This is not visible clearly. Wait. See, three 8 40 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x है हमारे पास। इन दोनों को हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, उसको भी ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6 3 8 24 0 इक्वल्स टू 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 minus 1280 equals to 0. This is the required equation. I hope this question is also clear. This was quite a little tricky I can say, but हमें speed, distance और time का ये formula याद होना चाहिए, speed equals to distance upon time। तो उससे हमें टाइम निकालना है, तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर दिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम, देन वैल्यूज पुट करनी है, देन एक इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, जस्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, और वी कैन से इन एन इक्वेशन फॉर्म। ऑलराइट,
Okay, so now after this, now our exercise 4.1 is clear, done, complete. And now exercise 4.2, 3 questions are left that we'll be discussing in our next video. अभी हम इस video में we'll be discussing some extra questions. So let's start. So the question says find the root of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equals to 0. Again by middle term splitting. Let's start x square x and then constant term. So it is already in the correct position. So minus x को हमें ट्रांसपोज करना है ऐसे कि माइनस करके तो 1 आए माइनस 1x आए एंड मल्टीप्लाई करके आए 6 इंटू 2 12. इट मीन्स बेसिकली 12 के फैक्टर्स चाहिए हमें. So 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, right? So 1 into 12, 2 into 6 and 3 into 4 माइनस करके 1 आना चाहिए. So 1 माइनस करके 1 आएगा 3 और 4x में. So 3x and 4x. तो अगर हम दोनों को माइनस करते हैं विल गेट प्लस माइनस माइनस एक्स एंड साइन नेगेटिव. हमने ग्रेटर नंबर के साथ माइनस रखा बिल्कुल करेक्ट है. So it means 6x square as it is plus 3x minus 4x minus 2 equals to 0. Correct? Now taking common from these two terms and then from these two terms. यहाँ से common आएगा 3x. We are left with 2x plus 1. Similarly यहाँ से common आएगा minus of 2. So 2x plus 1 equals to 0. ठीक है? Now our next step is yes. So our next step is whole common आ जाएगा 2x plus 1, 2x plus 1. So 2x plus 1 whole common आ जाएगा. We are left with 3x minus 2 equals to 0. अब ये दोनों को हमें separately equal to 0 put करना है so that we can get our two roots. देखो हमेशा always remember that we have a quadratic equation. It means we'll get two roots. So 2x plus 1 equals to 0. यहाँ से 1 root आएगा. 3x minus 2 equals to 0. यहाँ से second root आएगा. So 2x equals to 1 पॉजिटिव है ट्रांसपोज होके नेगेटिव. अब x 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो अब 2 डिविजन में चला जाएगा. Similarly this is 3x equals to 2, x equals to 2 upon 3. So we can say that two roots of the equation 6x square minus x minus 2 are minus 1 upon 2 and 2 upon 3. So these are the two roots of the quadratic equation. Roots हमने कैसे निकाले? By middle term splitting. Middle term split करना है हमें. Doesn't matter अगर कुछ fraction में आ जाता है तो भी हम उसका LCM लेके we will solve it. अगर कुछ root में आ जाता है तो भी doesn't matter, उसमें भी middle term splitting हम use कर सकते हैं. We have already done these type of question in exercise 4.2 question number 1. उसमें in every it has every variety of question, right? उसमें root वाला question भी है, उसमें fraction वाला question भी है. So I would suggest that please practice them again. Okay? So please note down this extra question fast.
Okay, so this was one extra question. I hope you have written this question in your notebooks, and now I'm signing up here. I'll be coming up with a new video. In that video, we'll be completing our exercise 4.2 also. So if you have any doubt, if you have any query, please don't forget to mention so that I can solve that for you. And stay tuned for my next video. Thank you.